पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की एक सांसद जिसका नाम है माहुआमोitra, जो काफ़ी फेमस और सुर्खियों में बनी रहने वाली सांसद है। 2019 में पहली बार जीतकर वह संसद में पहुंची थी, मगर आज उनकी संसद सदस्यता चली गई है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आज हम इस पर अपनी चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, माहुआमोitra जी पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी और इनकी जो कहानी है वह बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है। यह इनके जो शौक है वह काफ़ी महंगे हैं। यह पैसे लेकर के सवाल पूछने का मामले में निष्कासित हुई है। निशिकांत दुबे जी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि माहुआमोitra जी पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती है, अपने दोस्त हीरानंदानी जी को लाभ पहुंचाने के लिए अडानी के सवाल पूछती है सरकार से, जिससे कि जो सरकार जवाब देती है वह ऑथेंटिक जवाब होते हैं और उस जवाबों को लेकर के वह अपने दोस्त हीरानंदानी जी को उन जवाबों को दे करके उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सवाल पूछती है। जब इस बात की जांच हुई कि ये ऐसे करती है तो ये बात कहीं ना कहीं सच हुई सामने आई, क्योंकि जो इसके माहुआमोitra के एक पुराने दोस्त थे जयंत जी, उन्होंने आरोप लगाया था ये सब चीज़। और आरोप क्यों लगाया था, पिछले दिनों उनकी बात तभी आपस में चर्चा में आई, सबके सामने आई कि उनका एक डॉगी था जयंत जी का, जो ये माहुआमोitra जी लेकर चली गई और इस बात को लेकर में विवाद होगा और विवाद काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि डॉगी जो है ना दोनों को पसंद था, जयंत जी को भी पसंद था और माहुआमोitra को भी। कोई छोड़ने को डॉगी को तैयार नहीं था, डॉगी ने सारा खेल बिगाड़ दिया इनका। तो इस बात को विवाद जब हो गया तो जयंत जी ने निशिकांत दुबे जी को ये बात बता दी कि माहुआमोitra पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती है। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि उन्होंने तो जो अपनी आईडी पासवर्ड था लॉगिन करने के लिए जो सवाल पूछा जाता है और जिससे अपनी एक सरकारी आईडी और पासवर्ड मिलता है, वह आईडी और पासवर्ड भी हीरानंदानी जी को दे रखा था। हीरानंदानी जी ने इस बात को कबूल भी कर लिया और फिर खुद माहुआमोitra ने इस बात को कबूल कर लिया और इस बात को लेकर के एक समिति बनी गई संसद के अंदर। उस समिति ने जांच करके रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट दे करके आज उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया। तो दोस्तों किस प्रकार उन्हें निष्कासित करा गया संसद में, पहले ये देख लेते हैं। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती माहुआमोitra के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती माहुआमोitra का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माहुआमोitra ने इस पर क्या कहा? Since I was not allowed to speak inside Parliament, I am using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged
partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Loksabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manovikataar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You used every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of it. So thank you very much. Oh, well done.